Now we will continue with exercise 5.2. In this exercise, you have word problems. To solve the word problems, you have 5 important steps. You just quickly remember these steps and then we will try solving the word problems. First step is, which is very important, is you must read the problem well and understand it. Understanding of the problem is very important. That will help you to solve the problem faster. Okay. Then second step is take appropriate variables for the required quantities. Now there are going to be two variables because we are learning linear equation in two variables. Okay. Then third step will be, from the given conditions of the problem, you will have to formulate or you will have to make out the equations. Equations बनाना है आपको from the given conditions. After you make the equations, then you will use any one of the method, whether it is substitution method or elimination method, to solve the equations and find the value of variables. Once you find the value of variables, you will verify them. After you find the value of variables, you will check them and then you will write the appropriate solution at the end of your problem. Okay, so these are only 5 important steps which you have to do while solving the word problems. Okay, now we will start with exercise 5.2, question 1. First question, I have written it on the board so that by reading the question, we will solve it simultaneously here. That will be easy for you and it will be better for your understanding. Okay. The first question is, in an envelope. All of you know what is an envelope, जिसमें हम letters डालते हैं उसे envelope बोलते हैं. In an envelope, there are some मतलब दिए नहीं है हमको, 5 rupee notes and some 10 rupee notes. एनवलप में कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है. ओके. देन टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स इज ₹350. तो इतने तक हमने प्रॉब्लम पढ़ लिया है. पहली कंडीशन आ गई है, टोटल अमाउंट इज ₹350. इतने तक पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट नंबर ऑफ 5 rupee नोट इक्वल टू x. दो वेरिएबल्स बनाने हैं हमको, एक x फॉर 5 rupee नोट एंड नंबर ऑफ 10 rupee notes is equal to 1. ओके. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं. जनरली वी यूज x एंड y टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विच आर साइमल्टेनियस. सो देयरफॉर अभी वैल्यू ऑफ x नोट्स ऑफ ₹5 कितने हो जाएंगे? 5x. x नोट्स है 5 रुपीज के, तो वो बन गए 5x. सिमिलरली वैल्यू ऑफ y नोट्स ऑफ ₹10, दैट हैपन्स टू बी 10y, क्योंकि हमारे 10 रुपी के नोट के लिए वी हैव यूज द वेरिएबल y, सो इट्स वैल्यू विल बी 10y. Okay. Now, according to first condition, total amount of these notes is ₹350. So, from first condition, हमारी जो first condition है वो बता रही है कि इसकी और इसकी अगर हमने टोटल की, मतलब हमें एडिशन यूज करना है. सो 5x plus 10y is equal to
350. This is your first equation. But if you see this equation very carefully, this equation is divisible by 5. और ऐसे क्यों करना है? ताकि we get the equation in small format. मतलब हमारा जो कोएफिशिएंट्स है, जो नंबर्स है, वो कम हो जाएंगे. इक्वेशन रिड्यूस करना है. सो डिवाइडिंग बाय 5. हर वक्त ऐसे करना है? नहीं, ऐसे होगा ही. वी कांट से. वी विल जस्ट डू इट हियर बिकॉज इस इक्वेशन में हो रहा है. सो x प्लस 2y इक्वल टू 70 एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके. नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अभी हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है. उसके लिए वी विल फर्स्ट स्टडी द प्रॉब्लम अगेन. The number of 5 rupee notes, 5 rupee notes हमारे हैं x, are less मतलब कम. So you are going to minus by 10 than twice the number of 10 rupee notes. Twice the number of 10 rupee notes मतलब 2y. Twice मतलब 2 times. 10 rupee note के लिए we are using it y. See, the number of 5 rupee notes are less. So minus x. और कितने से लेस है वो? by 10. By 10 means this is your second equation from the second condition. Now we will just rewrite this equation. So minus x plus 2y इक्वल टू 10 और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ओके. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. ओके. कौन सी भी ले सकते हो आप. एलिमिनेशन ज्यादा इजी है. सो अगर आपने देखा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. x की साइन अपोजिट है. ओके. सो टू गेट द क्लियर आइडिया ऑफ द इक्वेशंस वी विल फर्स्ट राइट द इक्वेशंस. सो x प्लस 2y इक्वल टू 70. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. माइनस x प्लस 2y equal to 10. This is my equation number 2. Now if we see clearly, the value of x has opposite signs. Coefficients same है इनके, so they will get cancelled out if we add equations 1 and 2. Okay, so adding 1 and 2. 1 और 2 को अगर हमने ऐड कर दिया, so what happens? x plus 2y equal to 70 minus x plus 2y equal to 10. When we add it, x gets cancelled out. So 4y equal to 80. So y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 upon 4 and that is 20. 80 upon 4 is 20. So y is equal to, we have got the answer as 20. y मतलब 10 रुपी के नोट्स. हमारे पास कितने 10 रुपी के नोट्स जमा हो गए? 20. ओके. नाउ दिस वैल्यू ऑफ y we will either substitute it in variable 1 in equation 1 or in equation 2. Okay, whichever is convenient for you. So put y is equal to 20 in equation 1. I take 1 because 1 is positive. सभी में प्लस है तो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है. ओके. सो x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में मैंने y की वैल्यू डाल दी है 20 इज इक्वल टू 70. नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके. सिंपल मैथमेटिक्स है. x प्लस 22 जा 40 इज इक्वल टू 70. Now this 40 we have to take it on other side. जब
उसकी साइड चेंज हो जाएगी तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू 70 माइनस 40. 70 माइनस 40 हो गया 30. सो x इज इक्वल टू 30. आई जस्ट बॉक्स इट आउट. x मतलब 5 रुपीज के नोट्स, वो हो जाएंगे 30. ओके, सो नाउ वी हैव गॉट द सॉल्यूशन. x as 30, y as 20. नाउ वी हैव टू वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद ही हम आंसर प्रॉपरली लिख सकते हैं. सो अभी ये देखो, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आपने ये वैल्यूज डाल दी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. x को मैंने 30 डाल दिया, y को 20 डाल दिया. सो 30 प्लस 2 into 20 that is 40. 30 plus 40 will give you 70. अभी प्रॉब्लम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें डालेंगे 350 हो जाता है क्या? Let us see if we get it as 350. Okay, so x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे 30. 30 into 5 कितना हो गया? 150. ओके, y की वैल्यू डालेंगे 20. 20 into 10 कितना हो गया? 200. So 200 plus 150 is 350. Okay, so we have got it correct. So this answer, this solution which we have got is perfect. Now we have to write the answer. Therefore, 5 rupees notes is equal to 30 and 10 rupee notes is equal to 20. This is your solution. Okay, very simple problem. आपको सिर्फ प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है. You will have to break the problem into parts. Try to understand it. Then the solution is very easy and very clear. सभी कुछ आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है. You have to just go through it by reading carefully. आप जितने ध्यान लगा के पढ़ोगे उतने ही आसान होगा आपको ये प्रॉब्लम में इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए. और एक बार आपने इक्वेशंस बना लिए तो you can solve it very easily. Okay, note it down please. Now we will study one more simple problem for practice. Exercise 5.2 question 4. As we have discussed the steps, first we will read the problem and understand it. Okay, the total number of lions and peacocks in a zoo is 50. This is your first statement. If we consider number of lions as x and peacocks as y, तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी. ओके, सो वी हैव नाउ गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ फर्स्ट स्टेप. सो उतने तक हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ लायंस इज इक्वल टू x, number of peacocks is equal to y. So from the first condition, what is our first condition? Number of lions and peacocks in a zoo is 50. So condition is simple, x plus y equal to 50, and this is my first equation. पहले condition से we have done the first equation. Okay, now next, the total number of their legs is 140. अभी ये सोचने वाली बात है. How many legs does a lion have? 4. Okay, so here I will write lion has 4 legs. Okay, therefore number of legs is equal to 4x of lion is 4x. Then peacock has कितने legs होते हैं peacock को? Yes, 2 legs. It is a bird. So number of legs of peacock is equal to 2
y, और इन लेग्स की टोटल जो है वो 140 है. सो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन we will write the equation as 4x plus 2y equal to 140. Now if you see it carefully, the equation is divisible by 2. तो 2 से डिवाइड करके लेना है so that we get some smaller numbers for calculation. Dividing by 2. When we divide by 2, then we will get the second equation as 2x plus y equal to 70, and this is your equation number 2. Now we have got these two equations. If you see these equations carefully, y coefficient is same. तो हमेशा बड़े वाले इक्वेशन से छोटी वाली इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट बोथ द इक्वेशंस. x plus y equal to 50. This is my equation 1, and 2x plus y equal to 70. This is my second equation. Okay, now y के कोएफिशिएंट्स सेम है, सिर्फ हमने साइन बदल दी तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो उसके लिए बड़े इक्वेशन से छोटी इक्वेशन क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी है. सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 2 हम ऊपर लिखेंगे, उससे इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो 2x plus y equal to 70. This is my equation 2. x plus y equal to 50. और हमें माइनस करना है तो सभी के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ओके, जब हम माइनस करते हैं तो इक्वेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी. y को y कैंसिल हो जाएगा. 2x minus x is 1x. 70 minus 50 is 20. So we have got the value of x. x मतलब number of lions. So x is equal to 20. हमें x की वैल्यू मिल गई है 20, मतलब 20 lions are there in the zoo. Now put x is equal to 20 in equation 1 or equation 2. I'll put it in 1. It is easy to solve. So 20 plus y is equal to 50. 20 उस तरफ चला जाएगा. So y is equal to 50 minus 20. So y is equal to 30. मतलब पिकॉक्स कितने हो गए हमारे, 30. Now we will just verify if our answer is correct. x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट की 20, y की वैल्यू पुट की 30, तो टोटल एनिमल्स इन द जू है हमारे 50. सो 20 प्लस 30 इज 50. फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट. नाउ लेग्स की कंडीशन चेक करते हैं. 20 इंटू 4. 4 क्यों, क्योंकि लायन हैज 4 लेग्स, सो 80. 30 इंटू 2 60. 80 प्लस 60 हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ लेग्स 140. So our answer is correct. Okay, so now here we will write the solution as number of lions is equal to 20, number of peacocks is equal to 30. Okay, very simple problem. First we need to read it carefully, study the steps and then solve it. Okay, please note down. Now we will come to question number 5 of exercise 5.2. Please note the question number. It is question number 5. Very simple question, same like previous one. सिर्फ यहाँ पे the end result that we want is find cost of 2 chairs. मतलब हमारा जो रिजल्ट रहेगा एंड का, सॉल्यूशन जो है
वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 12. ओके, आई रीड आउट फर्स्ट, क्योंकि हमारा पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग इट प्रॉपरली. प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is 4500 rupees. Okay, so let number of chairs, chair के लिए we will use the variable as x and number of tables equal to y. So from first condition, पहले condition से we get directly the first equation. So from first condition we will write it here as 3x, क्योंकि 3 चेयर है, प्लस 2y equal to 4500, and this is my equation number 1. Now price of 5 chairs and 3 tables is 7,000. So again from second condition, the example is very simple and straight. 5 chairs, so 5x, 3 tables 3y, उसकी प्राइस जो है that is 7,000 rupees. This is your equation number 2. Now we will write the equations and then we will decide how we are going to solve it. So 3x plus 2y is equal to 4500. 5x plus 3y equal to 7,000. Now if we are going for elimination method, we need to make the coefficient of x और y same. Okay, तो y का हम सेम कर लेते हैं because the numbers are small. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो इक्वेशन 1 into 3 and equation 2 multiplied by 2. So we get the answer as 9x plus 6y equal to 45 into 3, 13500, and 10x plus 6y is equal to 14,000. 7 2s are 14, 3 zeros वैसे ही. So this is my equation number 3 and this is my equation number 4. Now if you see, the coefficient of y is same but sign is also same. तो अगर हमको साइन को रिवर्स करना है, एक को प्लस एक को माइनस करना है, तो हमें बड़े वाले इक्वेशन से छोटे वाला इक्वेशन क्या करना होगा, कम करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा. तो हियर आई विल से इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, या फिर यू विल राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. अभी फ्रॉम मतलब जो फ्रॉम वाला इक्वेशन होता है वो पहले आना चाहिए. सो 10x plus 6y equal to 14,000. This is our equation 4. Our equation 3 is 9x plus 6y equal to 13,500. माइनस करना है तो साइंस चेंज हो जाएंगे. 6y को 6y कैंसिल हो जाएगा. 10 minus 9 is 1x. Okay, 10 minus 9 is 1x is equal to 14,000 minus 13,500 is only 500. 1x मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 500, मतलब एक चेयर हमको 500 रुपीज में मिलेगी. नाउ पुट x is equal to 500 in इक्वेशन, या तो 1 में डालना है या 2 में डालना है, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो. I'll put it in equation 1.
बिकॉज दीज आर आवर ओरिजिनल इक्वेशंस। 3 और 4 में नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो 3 इंटू 500 प्लस 2y is equal to 4500. So 5 3s are 15, 1500 plus 2y. So 2y is equal to 4500 minus 1500. 2y is equal to, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3000. y is equal to 3000 का हाफ 1500. ये हमारी टेबल की कॉस्ट हो गई। ओके, नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 2 tables. Okay, so cost of 1 chair equal to x 500 rupees. Cost of 2 chairs 2x, so that is 2 into 500 and that will be 1000 rupees. Similarly, cost of 1 table is equal to y rupees 1500. Cost of 2 tables, 2 tables की कॉस्ट चाहिए, so it is 2y and that is 2 into 1000, 2 into 1500 and that is 3000. Okay, so and your combined cost of 2 tables and 2 chairs. Therefore, cost of 2 tables and 2 chairs is equal to 1000 plus 3000 and that will be 4000. Okay, now we will come to exercise 5.2 question 2. This is a slight different question, so I am taking it at the end. So because by now you must have got acquainted or you must be familiar by solving the word problems. So this is a, you can't say tricky, but a different type of problem, so I am taking it at last. Exercise 5.2 question 2. First we will read out the sum. The denominator of a fraction, so यहाँ पे we have a fraction in our question. The denominator of fraction is 1 more than twice its numerator. Okay, don't get confused. We will read the problem step by step and then we will solve it. So let numerator of fraction equal to x, denominator of fraction equal to y. Therefore, the fraction will be x upon y. Simple. Numerator we have taken it as x, denominator we have taken it as y. So the fraction is x upon y. Okay. Now we will see the denominator of fraction is 1 more. Denominator is 1 more than twice the numerator. Okay. So from first condition, denominator is 1 more than twice the numerator. 1 more इसलिए plus 1
twice the numerator 2x. So from first condition we have got this equation. The denominator is equal to 1 more than twice the numerator. Okay. So y is equal to 2x plus 1. Now we will just rewrite this equation. तो ये 1 इस तरफ आ जाएगा, y उस तरफ चला जाएगा. So 2x minus y is equal to minus 1. And this is my equation number 1. Now from second condition, abhi we will study the problem ahead. If 1 is added to numerator and denominator, so on both the sides we are going to add 1. So 1 is added to n and d. N and d matlab numerator and denominator. The ratio of numerator to denominator is 1:2. So I will say ratio is 1:2. So from second condition, just see the equation how we will get it. If 1 is added to numerator and denominator, numerator is x, so x plus 1. Denominator is y, y plus 1. The ratio is 1:2. Now we have to solve this equation. How can we solve it? We will cross multiply it. So 2 bracket x plus 1 is equal to 1 bracket y plus 1. Cross multiplication. So 2x plus 2 is equal to 1y plus 1. Numbers on the right hand side, variables on the left hand side. So 2x minus y is equal to minus 1. ये 2 उस तरफ चला जाएगा. So plus 1 minus 2. So 2x minus y is equal to minus 1, and this is my equation number 2. Now if you see carefully, both the equations are same. So here when both the equations are same, we have infinite values. मतलब हम गिन नहीं सकते, इतने values है. Infinite solution for this sum. तो solution कैसे निकालना है? Then equations 1 and 2 are same. Yeah, we will write here equations 1 and 2 are same. Therefore, we have infinite solutions. Now, how will we find the solutions? Suppose substitute x is equal to 1. Suppose हमने x की value 1 ले ली. Then what will be the value of y? We will put it in this equation. So 2 into 1 minus 1, y equal to minus 1. So 2 into 1, substitute x is equal to 1 in equation 1. So 2 into 1 minus y is equal to 1. Y will go this side, 1 will come this side. So 2 minus 1 is equal to y. So 1 is equal to y. Okay. So when x is 1, okay, we'll just make a small correction is there. Here it is minus 1. So 2 minus y is equal to minus 1. Now minus 1 will come on this side. So 2 plus 1 is equal to y. So 3 is equal to y. Okay. So when x is 1, y is 3. Therefore, fraction is 1 by 3. This is the fraction that we have received. Similarly, we can find the values by putting x as 2. When you put here 2, then 4
ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, सो +1 इज इक्वल टू y, सो इट इज y will be 5. So the fraction is when x is 2, y is 5. When x is 3, y will be 7. When x is 4, y will be 9. So these are some of the solutions. Therefore, solutions are 1/3, then 2/5, then 3/7, and so on. Okay, so these are the fractions that we will get. Very simple sum. See here, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के कंडीशंस लिए हैं. सो वी विल टेक न्यूमरेटर एज x, डिनोमिनेटर एज y, तो फ्रैक्शन हो गया x/y. फिर दिए हुए कंडीशंस से we will formulate two equations. Now both the equations are same, so we cannot solve it. When such condition comes, then we have infinite solution for it. Okay, how can we find the solution? We will take the values randomly from 1. Okay, so when put x is equal to 1, I get y as 3. ऐसे you will go on putting the values for x. x2, then you will get some value for y. x3, you will get some value for y. Like this, it will go on and on and on. So it is said that this sum has infinite solutions. Infinite matlab number of solutions which we cannot count. So it is called as infinite solutions. Okay? Yes. Please note it down. So like this, you can solve the word problems. It is very easy and simple. You just have to follow the steps like understand the problem, read it properly, understand the problem, then use proper variables just as we have used in our examples. Table on chair, x and y, numerator and denominator, x and y. You can use any other variable names also, but generally used are x and y. So we have done this. After reading the problem step by step, you will go through the conditions and then write appropriate equations. After you write the equations, you will solve them either by elimination method or by substitution method. Generally elimination is used because that is easy to solve the problem, and after that you verify the answer. I have shown you how to verify it, and then we will write the solution. Okay, so in this chapter I have not solved all the problems from exercise 5.2, but I have solved major problems and some different types of examples which you will surely like. Okay, thank you.